स्क्रीन पर अब लेकर आएंगे ब्रिगेड एंटरप्राइजेस का। ब्रिगेड के लिए दो डेवलपमेंट्स है। एक तो चेन्नई में ये एक रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट के जॉइंट डेवलपमेंट का करार इन्होंने किया है। उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से 2000 करोड़ के रेवेन्यू की अपेक्षा है। साथ ही हॉस्पिटैलिटी साइड पर भी दरअसल कंपनी कुछ अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने वाली है। इन सभी डिटेल्स पर और जानकारी लेने के लिए हमारे साथ है ब्रिगेड ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रद्युमन कृष्ण कुमार। मिस्टर प्रद्युमन, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। क्या डिटेल दे पाएंगे इन दो प्रोजेक्ट्स की? हाउ बिग इज दिस रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट? Good afternoon. Thank you for having me on your show. As usual, ma'am, I'll speak in English because my Hindi isn't that great. So, yeah, we've signed a 16-acre land parcel in Chennai. We signed a joint development agreement yesterday. 16 acres in total. We plan to develop about 2.5 million square feet, which should have a realizable value of about 2,000 crores. It's located in a prime market of Chennai, so we plan to do upmarket high-rise residential over there. Joining me is Virendra, who's very who keeps abreast of what's the action like in Gurgaon, because those properties are like skyrocketing. But what is the rough price going on at this point in time in Chennai if you have to look at a so-called premium or a luxury property? Well, there's a difference between, say, the southern markets in that of Bombay and NCR. No, we jokingly say that Bangalore's selling price is Bombay's margin. But having said that, in Chennai we should typically look at rates of around 7,500 to about 10,000, depending on the micro market. Of course, core city areas will be higher, but this is typically the sweet spot as far as pricing in Chennai goes. But sir, what exactly happening in Gurgaon right now? I mean, prices are almost flying high. What kind of, I think, price hike possibilities we are expecting in Gurgaon market, especially in Delhi NCR market? Further appreciation in this zone? Sir, I don't have too much of an idea in terms of actual details of the Gurgaon market, because we focus our developments in the southern side, so Bangalore, Chennai and Hyderabad. While we'll have some color, but actual, in terms of what price increases might be, etc., I might not be aware of in Gurgaon. Is that attracting you, sir? Any plans to come to Delhi NCR market? No, sir, we are quite happy in Bangalore, Chennai and Hyderabad, the southern markets. We have a lot of depth over here. It's good markets, good metro cities. We are quite comfortable in these cities. It's large demand drivers are there here. And we continue to believe, sir, that real estate is a very regional play. One has to sink their foot, hands, everything, body fully deep into the market, grow the position in the markets that we are present in. Per se, you're saying roughly on an average 7,000 rupees a square foot. What kind of volume is likely to come off these prices for you? So, ma'am, for the next 1 year, we have planned about 11 million square feet of launches in the residential space. So that over the course of maybe 4 to 5 years of the project life, will earn about 10,000 crores at least as far as the realizable value goes. And we are planning these launches for the next 1 year. Further to that, some of these new properties, like the one that we have signed yesterday, will come on board. ओके, अब मैं थोड़ा सा एग्जैक्टली आपके क्लाइंट्स के और हमारे जो व्यूअर्स हैं उसके पर्सपेक्टिव से मिस्टर कुमार ये प्रश्न पूछना चाहूँगा। मुंबई और बेंगलोर मार्केट्स में अगले कुछ 6 से 8 महीने के अंतराल में, 1 साल के अंतराल में आपके कितने लॉन्चेस होंगे? और सर एक और चीज़ बात, ये बिलीव है मार्केट का कि बाय द एंड ऑफ आई थिंक अक्टूबर और नवंबर और पॉसिबली बाय अक्टूबर रेट्स थोड़े से कट होंगे। ऐसे में क्या प्राइसिंग यहाँ से फर्दर स्ट्रांग हो सकती है क्या, स्पेशली रेजिडेंशियल मार्केट में? Yes, sir. Out of the 11 million square feet, about 20% is going to be launched in Hyderabad in the next 1 year, 30% in Chennai, and about 50% in Bangalore. This is the spread as far as the geographical markets go.
In terms of pricing itself, I think we are in a good cycle right now where the sales momentum is good, the pricing is good. It's not something that happens often. So in that sense, we are in a good space. Now, as far as rates itself go, we have not been affected by rates, the rate increase that took place in the last, few quarters or so. But we are also hopeful that the rates will continue to, the pricing will continue to increase over the next year or so. If we just dial back, sir, a little to say 2015-16 pre-demonetization, markets like Bangalore, the size of the market itself was about 55-60 million square feet for residential absorption. Today, with all the increases that we see, we are still as a market size only at 50 million square feet or so. So there is still a large headroom for us to grow, both in terms of volume as well as in terms of realization. ओके अच्छा मिस्टर कुमार, यही चीज़ मैं आपसे पूछूं कि अगर ब्रिगेड के लिए आज की तारीख में एट प्रेजेंट कॉमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों का रेवेन्यू मिक्स क्या है, और यही प्राइसिंग पावर आप देख रहे हैं अगले 1.5 साल में कमर्शियल में भी, और वहाँ पे डिमांड कैसी है इस वक्त? So commercial mein we have had a good sort of quarter. The previous one we have leased about 500,000 square feet. So our total size of our commercial portfolio, which is lease rental in nature, is about close to 9 million square feet, of which about 93-94% is leased. So we have seen strong demand both in SEZ and non-SEZ space. In fact, non-SEZ space is zero vacancy that we have. So there is good demand, sir, for the commercial space, both in terms of leasing as well as for sale. So if we are able to tenant a space, there are a lot of buyers who are looking for such spaces. They want commercial space where there is a tenant, there is rent yielding, and there is a secure sort of income coming out of those assets. On the hospitality side, you are going to be investing in that in the new project as well. What is your target in terms of how many rooms do you want to add on in the coming years, especially in the new fiscal? और roughly आपका क्या target क्या रहेगा कि hospitality business कितना contribute करेगा आगे जाकर आपके revenues में? So over the next 1 year, we plan to start construction of about 1,000 rooms. That is our current plan for the new hotels. We already have about 1,500 rooms operational, and we have about another 125 rooms that will come on board by the end of this calendar year. Say by Diwali, we should have 125 more rooms come in. So we are hoping that in the next 5 years to 6 years, we pretty much double our portfolio, closer to 2,800 to 3,000 rooms is what we plan. In terms of the hospitality revenue itself, we are currently, this financial year, we should close out in the range anywhere between 450 to 500 crores. And, the next financial year will be, slightly better than this, but with the increase in growth and in pricing as well as occupancies. So we'll have to see. We typically don't give guidance, so therefore I'm stopping myself with this, ma'am. No problem. Thank you very much for taking time out and answering all our questions. Good luck for the next project that comes under your way. Thank you. तो रियल एस्टेट में डिमांड की कोई कमी नहीं. ऑफ कोर्स चेन्नई का मार्केट है और गुड़गांव के प्राइसेस हैं. लेकिन ओबरॉय रियल्टी पर हम चर्चा कर रहे थे. पंकज, इस स्पेस में इस समय अगर नई खरीदारी किसी को करनी है, कौन सा स्टॉक आपको ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है? क्योंकि अपॉर्चुनिटीज कई सारी, आपका गोदरेज है, डीएलएफ है, ओबरॉय में एक अच्छा मौका है, ब्रिगेड का हमने स्केल समझा. आप किस तरफ स्क्यूड करेंगे अपने आप को? तो देखिए, ये स्पेस लास्ट ईयर अगर आप देखें तो करीब 60-70% चला है, तो ऑब्वियसली वैल्यूएशन काफी अच्छे हो चुके हैं मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स के. बट आई थिंक फंडामेंटल्स भी ओवरऑल इंप्रूव हो रहे हैं. एक टाइम था जब इन्वेंट्री टॉप 7 सिटीज का करीब 50 मंथ्स के ऊपर था, जो अभी गिर के करीब 17 मंथ हो चुके हैं. तो ओवरऑल कहीं ना कहीं ये इंडस्ट्री को एक प्राइसिंग पावर देता है. जो कंपनीज हमें स्ट्रक्चरली पसंद है उनमें एक ऑब्वियसली ब्रिगेड है, बिकॉज ब्रिगेड का सबसे अच्छी चीज ये है कि ये 4 से 5 साल से ज्यादा का डेवलपमेंट लैंड रखते नहीं है, तो इनकी बैलेंस शीट कभी हैवी नहीं रहती. इनका रेसिडेंशियल साइड में अगर आप देखेंगे तो डेट कैरी करते नहीं है. प्लस बाकी और बिजनेसेस भी अच्छे कर रहे हैं. आई थिंक 2023 में इनका जो रन रेट था एनुअल रेवेन्यूज का करीब 3-3.5 हजार होता था, और अभी इनका जो लॉन्च पाइपलाइन है अगले 1 साल में करीब 10 मिलियन के ऊपर है. तो कहीं ना कहीं ये 7 से 8 हजार के
जाने वाला है। तो आई थिंक काफी बेहतर ग्रोथ रेट ट्रेजेक्टरी पे है, कोई बैलेंस शीट को लेकर इशू नहीं है, तो ये कंपनी हमें ऑब्वियसली अच्छी लगती। दूसरा जो कंपनी अच्छी लगती है वो महिंद्रा लाइफस्पेस है। आई थिंक कहीं ना कहीं जब ये कंपनी का थाने के प्रोजेक्ट्स वगैरह लॉन्च होना चालू होंगे तो हमें लगता है कि आगे जाके उसके भी सेल्स मोमेंटम वहां पे उसको मिलना चालू हो जाएगा। बाकी स्टॉक्स भी ठीक हैं, बट आई थिंक काफी चले हुए हैं, अगर वो करेक्ट होते हैं तो देन डेफिनेटली देखना चाहूंगा मैं, बट एट दिस पॉइंट टाइम आई थिंक ब्रिगेड एंड महिंद्रा लाइफ बेटर। ओके, रियल स्टेट पे आपने